Good morning, everyone. It's me, Fatma, and we are going to discuss the topic industries. Let me tell you what is industry. So basically, it refers to the economic activity that's concerned with the production of finished goods, extraction of raw minerals, and provision of services. Actually, industry जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. एज वी ऑल नो दैट इकोनॉमी के तीन सेक्टर होते हैं. फर्स्ट प्राइमरी सेक्टर एंड सेकंड सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड टर्शियरी सेक्टर. सो जो इंडस्ट्री है ये फॉल करती है इकोनॉमिक के सेकेंडरी सेक्टर में. ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो सेकेंडरी सेक्टर में आती है. दैट्स कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स. इसमें प्रोड्यूस होते हैं फिनिश्ड गुड्स लाइक व्हाट, मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन. लाइक पहले रॉ मटेरियल्स आते हैं, फिर उन्हें इंडस्ट्री में हमें कन्वर्ट करते हैं एक फिनिश्ड गुड में. लाइक कॉटन आता है इंडस्ट्री में, फिर हम उससे ही क्लोथ्स बनाते हैं. सो यही है फिनिश्ड गुड्स. Now extraction of raw minerals. As we all know that we extract minerals from earth. So let me give an example of iron, ore, petroleum, and coal. Extraction of raw mineral like iron ore, petroleum and coal and provision of services. हमें पता है कि सर्विसेज जो होता है वो टर्शियरी सेक्टर में आता है, मगर इंडस्ट्री भी प्रोवाइड करती है, वो जनरेट करती है एम्प्लॉयमेंट. ये भी एम्प्लॉयमेंट देती है. सो इट्स ऑल अबाउट इंडस्ट्री. I'm Jessa Sajad. As you all know that Fatma had already told you about what is industry. Now I'm going to discuss another topic, that's industrial system. इंडस्ट्रियल सिस्टम ये वो प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले ये जानना होगा कि व्हाट आर रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं एज इनपुट्स बनाने के लिए क्या, फिनिश्ड गुड्स. ये मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते क्या है, व्हाट आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स. तो रॉ मटेरियल से हम जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हैं वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स होते हैं जो रॉ मटेरियल से हम बनाते हैं बाय यूजिंग लेबर, टूल्स और मशीन्स. सिंपल डिफिनेशन हम इंडस्ट्रियल सिस्टम की ये बोल सकते हैं, इट्स अ सिस्टम इन व्हिच इनपुट्स आर प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस आउटपुट्स. We understood the definition of industry and the industrial system. I, Chahat Rashid, going to discuss the third topic, which is about factors affecting the location of an industry. If we have to set up an industry, we need these factors. First factor is availability of raw material. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जहाँ पर हमें आसानी से रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो तो वहाँ पर हम एक इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं. सेकेंड फैक्टर इज अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ पर रोड्स आसानी से हो, जहाँ पर रोड्स मिले हमें, वहाँ पर हम एक इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं. थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, जहाँ ज़मीन अच्छी खासी हो वहाँ पर हम एक इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं. Fourth factor is availability of electricity. जहाँ पर बिजली दस्तयाब हो वहाँ पर हम एक इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं. Fifth one is capital. Capital is of two types, capital in time and capital in cash. Sixth one is availability of laborers.
जहाँ पर मजदूर हमें मिल सकते हैं वहाँ पर हम एक इंडस्ट्री को सेट कर सकते हैं. थैंक यू. Thanks, Yas Rashid, for explaining the factors affecting the location of industries. Now I will continue by explaining the classification of industries. To understand industries better, they are classified on the basis of raw material, size, and ownership. Now, classification on the basis of raw material. This classification depends on the type of raw material used by the industries. First, agro-based industries. These industries use agricultural products as their raw material, like sugar industry, tea industry, flour and bakery industry. Now, the second one is mineral-based industries. These industries use minerals obtained from the earth as their raw material, like iron and steel industry, aluminum industry, and cement industry. Now, the third one is marine-based industry. These industries use products obtained from the sea and ocean as their raw material, like fish processing industry and seafood packing industry. Now, the fourth one is forest-based industries. These industries depend on the forest products like paper industry, furniture industry, rubber industry. Now, classification on the basis of size. Industries can also be classified according to the amount of investment, labor, and production involved. First, large-scale industries. These industries require huge investment, large machinery, advanced technology, and a large workforce, like iron and steel industry, petrochemical industry, and automobile industry. Now, the second one is small scale industries. These industries operate with limited capital, less machinery, and a small workforce, like battery units, garment making, and local shops. Now, classification on the basis of ownership. Industries can also be classified according to who owns and manages them. First, private sector industries. These industries are owned and managed by individuals or private companies like Apple or Geo. Now, second one, public sector industries. These industries are owned and managed by the government, like BSNL and Indian Railways. Now, the third one is joint sector industries. These industries are owned jointly by the government and private companies, like Maruti Suzuki or Oil India Limited. Now, the fourth one is cooperative sector industries. These industries are owned by a group of people who work for mutual benefit, like Anand Milk and Sudha Dairy. Thanks.